हाँ जी, परफेक्ट। तो मैं पहले तो ना मैं चाहता हूँ आप सभी बच्चों को कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि आपने बहुत ही सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ज़िंदगी में पाया है और ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ज़िंदगी का जो शायद आज आप उसको उतना एब्ज़ॉर्ब नहीं भी कर पा रहे हो उस सक्सेस को कि हम कहाँ पहुँचे हैं, लेकिन ये एक जैसे एक कमिटेड स्टेप है। यानी इसके बाद जो ज़िंदगी है, इसका जो ट्रैक है, ये पूरा अलग जाएगा। तो मेरा आज का जो प्लान है, मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से जो मैंने सीखा इतने सालों में, उससे मैं कई ऐसे पॉइंट्स मैं आपको देना चाहूँगा जो आपके डिसीजन मेकिंग में आपको मदद करेंगे और जहाँ पे भी बीच-बीच में हम ऐसा टाइम देंगे कि जहाँ-जहाँ आप पूछना चाहें कोई बात तो हम उसको लाइव भी कर देंगे। मैं थैंक यू करना चाहता हूँ कपिल को हूज़ इनवाइटेड मी हियर। आई थिंक बहुत ही डीपली एंगेज्ड हैं वो आपके साथ और बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि कौन हम जब स्टूडेंट के साथ हम मेहनत कर रहे हैं तो आई थिंक ऑडियो I think it's okay. Dr. Sethi, if there is an audio issue, I'll let you know. Audio ठीक है. ठीक है, ठीक है, ठीक है, परफेक्ट है ना? सो मुझे क्या लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ना हम क्विकली सीधा काम की बातों पे आते हैं ताकि हम जो-जो बच्चे जानना चाहते हैं वो कर पाएँगे। मैं चैट भी देख रहा हूँ, तो अगर कोई चैट में कुछ पूछना चाहेगा तो चैट में कर सकता है, कोई सामने आके पूछना चाहेगा तो मैं उसको भी हैंडल करने की पूरी कोशिश करूँगा। मुझे पता है कि 500 बच्चे हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हम सभी 500 बच्चों को पूरा सैटिस्फाई करने की पूरी कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले ना मैं चाहता हूँ पहली बात कर लेते हैं कि मेरी बात आप क्यों सुने, है ना? क्योंकि कई बार ऐसा आपके मन में आएगा कि यार हम तो खुद ही बहुत होशियार हैं, हम खुद देख लेंगे। तो मैं थोड़ा-सा मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने जब मैं मेरे स्कूल में पढ़ रहा था, तो मैंने दिल्ली के एक ऑर्डिनरी स्कूल से मैं पढ़ा हूँ। मेरे स्कूल से कोई पीएमटी का कोई रैंक नहीं निकला था, तो लेकिन थोड़ा-सा मैं एनसीईआरटी की किताबें ज़्यादा पढ़ता था थोड़ा और ब ज़्यादा चीज़ें पढ़ी नहीं मैंने। सिर्फ़ एनसीईआरटी किताबों पे ज़्यादा फ़ोकस किया। मैंने मेरा जब पीएमटी का एग्ज़ाम दिया तो मेरा ऑल इंडिया पीएमटी में रैंक 4 था और वहाँ से मैंने मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से मेरा एमबीबीएस किया है। मैंने जब मैं एमबीबीएस कर रहा था तब भी ऑर्डिनरी स्टूडेंट था, तब भी कोई मेडल नहीं आते थे। तो लेकिन थोड़ा एमसीक्यू स्किल अच्छा था, थोड़ा-सा कॉमन सेंस अच्छी थी, तो मैं ऑल इंडिया के अंदर फिर रैंक 4 आया मेरा पीजी के अंदर और मैंने रेडियोलॉजी में मेरा एमडी किया दिल्ली से। अभी आप रेडियोलॉजी के बारे में नहीं जानते होंगे क्योंकि अभी आपके थॉट प्रोसेस में अभी चल रहा होगा कि हार्ट सर्जन बनना है और ये सब आप सोच रहे होंगे। लेकिन बाद में जब आप पीजी के लेवल पे पहुँचेंगे, आप देखेंगे रेडियोलॉजी टॉप सॉर्ट आफ्टर ब्रांचेस के अंदर से एक है। तो मैंने रेडियोलॉजी में मेरा एमडी किया। उस दौरान पे फिर मैंने देखा कि उस समय डॉक्टर्स को कोई पढ़ा नहीं रहा था। तो एक हमने इंस्टीट्यूट शुरू किया जिसका नाम है डैम्स और आज हम इंडिया के लीडिंग इस नीट पीजी की प्रिपरेशन के अंदर जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे उसको रन करते हैं। 250 ब्रांचेस हैं हमारी पूरे इंडिया में और 50,000 के लगभग बच्चे हमारे साथ पढ़ते हैं। तो मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एक ना थोड़ा आपके पास फेथ जनरेट हो कि यार मैं बात कर रहा हूँ तो मैंने काम किया है ज़िंदगी के अंदर, हमने और उसको मैं आपके पास लेके आना चाहूँगा उस बात को, है ना? उस पूरी बात को मैं आपके पास पिक्चर में लेके आऊँगा। आप जब मुझे बस 1 सेकंड दीजिए, मैं मेरा स्क्रीन आपके लिए लेके आ रहा हूँ। हाँ जी। तो ना हमने ना आप लोगों के जो गूगल फॉर्म आए और जितने भी आपने क्वेरी किए, हमने उन सबको ना अलग-अलग क्लस्टर्स में इकट्ठा किया और हमने देखा कि क्या क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिनकी अगर हम बात करें, तो आपके लिए फ़ायदा हो सकता है या आप उसके डिसीजन मेकिंग में फ़ायदा ले सकते हैं। तो एक ना जनरल से क्वेश्चन थे जो बहुत सारे बच्चों ने पूछे हुए थे कि कौन-सा कॉलेज कौन से फैक्टर होते हैं जिससे हम कॉलेज को डिटरमाइन करते हैं? हमें क्या उसकी बेसिस रखनी चाहिए? कॉलेज की प्रेफ़रेंस कैसे भरनी है? क्या क्वालिटी होनी चाहिए मेरे अंदर? ये सब और एक कई बच्चों की क्वेरी थी कि कौन से कॉलेज के अंदर हम जब जाएँगे तो पीजी एंट्रेंस में फ़ायदा मिलेगा? शुरू से कैसे पढ़ें? हुँ? ओके थोड़े बच्चे मुझे लगता है कि इंग्लिश भी जानना चाहते हैं, तो कपिल मैं हिंदी, इंग्लिश दोनों में बोलूँ कि कैसा रहेगा कंफर्टेबल? I think some students are from South India, and let us assume all these students can now understand English, so we can switch to pure English as well. ओके, सो आई एम कंफर्टेबल मैं ट्राई माय बेस्ट कि मैं दोनों ही भाषा में बात करूं बिकॉज़ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके लिए क्लियर करने में मदद मिलती है बट आई ट्राई माय बेस्ट टू कवर एवरीथिंग इन बोथ द लैंग्वेजेस डोंट वरी एंड आपसे मैं डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछने के लिए आपको जगह दूंगा, है ना? एंड आई सॉ a lot of questions but first of all what I want you to understand is what is the life cycle of a medical student, because if you understand this then you will be able to follow the selection criteria. So what happens is
you are entering the medical life through NEET UG. NEET UG का पेपर दिया and you are entering into the medical life, and what is happening is lot of your thinking के निकल पड़ी, मैंने कर लिया जो करना था. But I want you to understand, this is not a destination game, this is a journey game. It is not like आप पहुंच नहीं गए, actually you are beginning your journey as a doctor. So what will happen is, once you get into a medical college, and first question I want to take it here only, I keep seeing a lot of students asking me, sir, I am getting BDS, a dental graduation from a topmost college, and MBBS from a peripheral college. There is no doubt in my mind you should go for MBBS over BDS. There is, and I'm sure you can do your own research also, but I have seen the careers of a lot of dental graduates and medical graduates. MBBS has far more opportunities than a dental graduate. So even if the college is, a consideration for you, MBBS should be preferred over the BDS. And, I'm speaking in a very direct and a very decisive answers here, because this is what I have seen. I've seen in last 20 years, I've seen the people who have picked up dental graduation from my colleagues and my juniors, and I've seen their career graphs, and I can vouch for it. A doctor has a far better career graph there. So you enter your MBBS, this is what I'm assuming from your scores. So what will happen is, you will enter, there will be 4 years for you: first year, second year, third year, fourth year. At the end of each, you will have an exam. Okay. And the key word here to understand is that this exam pattern is slightly different in AIIMS as compared to other institutes. In AIIMS, this third and fourth year exam is taken together. So this is a difference between a state medical college and AIIMS, that in AIIMS you have 3 papers: first year, second year, third and fourth year combined paper. Other medical colleges, first year, second year, third year, fourth year. Everybody follows? Then you do a internship. Now, whatever I'm telling you now is in the place where they are changing everything. After internship, as of now until 2022, you write your NEET PG exam. Okay. After your internship, as of now, and even in 2022, you will write NEET PG exam. But what is happening is, now entire medical education in India is changed. Now there is a new body governing the medical education called as NMC. And what is this saying is that after your fourth year, you will have an exam called as next part 1. After internship, you will have next part 2. Okay. So the timelines are very different from the past, and the decision making has to keep this in mind. So immediately I am going to take you to a very important question now. Sir, should I do my MBBS from India, or if I am not, maybe I do not have a good rank, can I go abroad and study? Again, there will be a big concern here that as of now, if you graduate abroad and you come back to India, you have to write an exam called as FMGE, Foreign Medical Graduate Screening Exam. And the passing rate in that exam is at the best 20%. But now imagine that now the method will be even more strenuous. You will have a next exam to give even if you go abroad as a graduate. So my answers here are, I would always prefer studying in India over going abroad. Going abroad for MBBS should be governed by your feeling that, okay, I have given 1 attempt, 2 attempts, I'm tired, I've done my best, I have no further improvement possible. Let me explain it to you. This is very important, and this will help you to sort a lot of things in your mind. Suppose you have given this year's exam and you know that your physics was weak, or your biology was weak, or your chemistry was weak, and if you work on it, you can improve. Or if you know that you have not been able to give your best attempt, or that there was some concerns at home, COVID tha, bahut mushkil tha, maybe you can think of another attempt. But if you think you've already done everything possible, then is the time where we look at the options like going abroad to study, for going to places like Russia, China, Philippines, Ukraine. Because when you come back, you are not licensed to practice medicine in India. You have to pass an exam, which is currently called as FMGE. You can do a Google about it, FMGE, and the pass rate for FMGE is around 20%. This is the best pass rate. Sometimes they even have 10% pass rate in some years.
And in 2023 onwards, it will all be shifted to next. But the important thing about next is going to be an exam even for Indian graduates. So if you study anywhere in India, you will not have a automatic license to practice medicine. You will have to pass an exam called as next, which is national exit exam. Should I'll just repeat in Hindi also for people who are from a rural background. अब हम एमबीबीएस खत्म करने के बाद ऑटोमेटिकली डॉक्टर नहीं बनेंगे, हमें नेशनल एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा, जो 2 स्टेप में होगा. स्टेप 1 फाइनल ईयर के बाद, स्टेप 2 इंटर्नशिप के बाद. ओके, नाउ व्हाई इज ऑल दिस इंपॉर्टेंट? This is all important because we are able to think of that I need to pick up good colleges, I need to go into good places with good academics, because I'll have to pass an exam later on. It is not an automatic thing that you can just go abroad and maybe go to any place and you become a doctor. When you come back to India without an exam, you are not licensed to practice medicine. This is called as licentiate exam. Okay, so this is a new thing. This is something which was never there in India, and 2023 onwards the current government has announced that they will have a exit exam. So I hope this was. And NEET PG, Ashish Goyal has asked a very good question. Once next is implemented, NEET PG and probably even the AIMS PG entrance exam will be replaced by next. Okay, but the difference here is next is not just a PG entrance exam. It is a mandatory exam to be passed to get license to practice medicine. Okay, so that is one thing. Second thing, I hope this gives you a ballpark idea about how the career would go on. Second change that they are introducing now is that from first year onwards, they are allowing clinical postings for medical graduates. It is slightly different from the past. So if you ask, some family member who has become a doctor, what they will tell will be different from what I will tell. Pehle, in first, second year, you had only basics, and third, fourth year, you had clinics. Now the current curriculum of MBBS is asking you to be in clinics from year 1 itself. So that is the idea. Okay. Are you clear? Are you clear? Okay. So now let's have some easy question before I take your tough questions here. Easy question here is, money is not a parameter of success in life. I keep meeting school children who will come and say, sir, doctor ban ke kitna paisa kama lenge? I'll again repeat in English. Sir, how much can I earn after becoming a doctor? This is not a correct parameter of success. Please do not compare your life with people who are pursuing engineering or arts or humanities. They would have a different life curve altogether. But the kind of respect, and I'm again repeating it, it is very important. It is different from what you will read in newspaper. Newspaper में बोलेंगे डॉक्टर की कोई इज्जत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इज्जत है. And it is you cannot actually calculate your success by money. It is about how many lives you will touch and how much meaningful impact you will make. And I'm telling you today itself, लिख लो इसको, बहुत अच्छा massive impact आप ला पाएंगे. But you need to keep in mind that you should not become a money hunter, or you should not compare yourself to other people who would have a different lifestyle. सबको जिंदगियां नहीं बचानी है, तो उनकी जिंदगी का कर्व भी अलग होगा, हमारा अलग होगा. Okay, now, so let me take some questions here. Okay, so one question is, sir, I'm taking a question. Sir, MBBS course will be same outside India and India. It will be same, but the problems are, I will tell you the problems. In, like, suppose you go to China for do your MBBS, although right now it is not a recommended thing with the current India-China relationship and the COVID situation. But if you go to China, the patients will be talking in their local language, and that kind of stops your learning. And even in Russia, I have seen children having problems with language. Not only language, the other issues are that when you go abroad for the first time, it would be an eye-opener for you. You would actually see a different kind of lifestyle. And I have seen many students, they lose focus of studies altogether. As of now, you might say, sir, मेरे साथ नहीं होगा, बाकियों के साथ होता है. But I want you to know that when it hits you, it hits you. Okay, so there must be some reasons why the pass rate of foreign medical graduate entrance exam is around 20%. There must be reasons. One of the reasons is language. The curriculum followed in India is far more intense as compared to these countries. So that is one of the factors. And one bacha has asked, sir, okay, I can see the questions running. So let me just
quickly, give you. So this is what I have introduced to you, that there is a new curriculum MBBS, there will be a licentiate exam, NEET PG will be replaced by NEXT. So the next part one score will be your PG entrance determination. So next part one will be MCQ based exam, which will determine your PG seat. Part two will be practical exam after internship. Okay. यस आदित्य स्वरूप, आई होप आदित्य आपको भी पता चल गया कि नेक्स्ट के स्कोर से ही पीजी का सीट भी मिलेगा. बट इफ यू डोंट पास नेक्स्ट, you are not licensed to practice medicine. That is a very big change in India.